सो हेलो गाइस, आज की जो टॉपिक रहने वाली है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में रहने वाली है। एंड जो सेक्शंस के अंदर आने वाले हैं दोज आर सेक्शन 2C एंड 2L ऑफ द CrPC। एंड इसके साथ जो इंटरलिंकिंग सेक्शंस रहेंगे 154 एंड 155 ऑफ द CrPC। लेट्स गो इनटू द टॉपिक। सिनॉप्सिस जो रहने वाले हैं वो होगा मीनिंग, स्कोप, डेफिनेशन, इंटरलिंकिंग सेक्शन एंड कंक्लूजन। एंड यही फॉर्मेट में आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं फॉर योर LLB। एंड दिस मच कंटेंट इज़ इनफ फॉर फ्रेमिंग योर आंसर्स ऑल्सो। सो लेट्स गो इनटू द मीनिंग। इसका लिटरल मीनिंग जो रहेगा कॉग्निजेबल का एबल टू बी अपर हैंड, एंड नॉन कॉग्निजेबल का रहेगा नॉट एबल टू बी अपर हैंड, क्वाइट ऑपोजिट। So the person who can be arrested and person who cannot be arrested. Moving towards the scope, इसका स्कोप रहेगा सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में एंड 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो अंडर सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, तो फॉर विच, in which police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without warrant. So basically यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये है कि a person can be arrested without warrant if he have committed an cognizable offense. Then non-cognizable offense under section 2L. It means cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which, so for which and in which a police officer has no authority to arrest without warrant. तो बेसिकली यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये हो गया इनका बेर एक्ट की डेफिनेशन। Next will be the differences. Let's see what are the differences between the cognizable and non-cognizable offense. The first one is very clear, arrest without warrant a cognizable offense होगा, तो non-cognizable offense में no authority to arrest without warrant. And cognizable offense is more serious when compared to the non-cognizable offense, as the offense punishable above 3 years comes under the cognizable offense, and the offense which is punishable under 3 years it comes under the non-cognizable offense. And next one is a police officer can investigate without order or direction from the magistrate. तो cognizable offenses में क्या हो जाता है कि a police officer gets a power here. So basically a power which is exercised without the order or direction from the magistrate. मगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता, he has to wait for the order or direction from the magistrate. And in cognizable offenses में क्या हो जाता है कि there is no opinion may be given to the aggrieved to file a complaint. तो जो जिसको ये हानि हुआ है या फिर जो भी ये रिपोर्ट कर रहा है उसको ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम जाके यहाँ पे कंप्लेन कर दो भैया, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। बट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हैज़ टू मेक अ कंप्लेंट, विदाउट complaint no action will be taken. So basically no complaint, no action. Next will be the interlinking section. These sections are very interesting because जो previous sections थे they were just a definition for cognizable and non cognizable offenses. But ये जो interlinking sections होंगे they give the real power to the police officer actually. So let's see what can a police officer can do under section 154. We have already saw in one of our video about the FIR. So basically FIR क्या होती है? First information report होती है. So if a person, agreed person is giving a oral statement, then it should be reduced to writing by him or under his direction and read over to him and signed by him finally. Next जो होगा, a substance shall be entered in a book to kept by such officer in such a form as a state government prescribed. So जैसे कि state government prescribe करेगी उस फॉर्म में पुलिस ऑफिसर को उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे इफ़ अ पर्सन committed an offense, cognizable offense, then the person who is giving the report mainly regarding the sections
like 354, 354A, 354B, 354C, and etc. These are the offenses actually committed against the woman. And यहाँ पे जो होगा, the person who is giving the report, he can seek to record the statement in his convenient place, because it is very sensitive in the case of the offense against the woman. तो यहाँ पे जो इंसान रिपोर्ट कर रहा है उसके कन्वीनियंट प्लेस में वहाँ पे जाके वो पुलिस ऑफिसर कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, एंड ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में बी. सो जैसे भी सिचुएशन की रिगार्डिंग होगा उस हिसाब से ही कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट इन द कन्वीनियंट ऑफ दैट पर्सन. And the recording of such information shall be videographed. The police officer shall get the information of the person recorded by a judicial magistrate under clause A of the section 5A of the 164 as soon as possible. So under 64 जो रहेगा confession रहती है. So उसके अंदर में भी जो भी information आती है while the magistrate is recording this confession, they may get the information regarding the cognizable offenses, and from there the police officer may direct it for the further proceedings. After recording the statement, a copy is to be given to the informant. वो भी free of cost में देना पड़ेगा उनको. On refusal, अगर कंप्लेंट लेने से और कुछ भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से वो लोग पीछे हटते हैं पुलिस ऑफिसर, then the person can send in writing to SP through post. So he is at liberty to send a complaint through the post to the superintendent of police. वहाँ पे क्या होगा, if the superintendent of police is can himself get into the case and can investigate, or he can direct any police officer to investigate the case. एंड जो इन्वेस्टिगेशन होगा 154 के अंडर वो होगा 156 के अंडर. नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विच कम्स अंडर द 155 ऑफ द CrPC. यहाँ पे जो होगा एज वी हैव डिस्कस्ड, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन के लिए और ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ेगा. सो एज सुन एज ही इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन, ही एंटर्स द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बुक, देन ही रेफर्स द इंफॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट. उसके बाद क्या होगा, while investigating a cognizable offence and submitting charge sheet for same, the police officer is not debarred from investigating non-cognizable offence arising out of same fact and including them in the final report, which is being said in the Parveen Chandra versus State of AP. So basically they are saying that अगर एक cognizable offence कमिट हो चुकी है और उसकी चार्जशीट भी सबमिट हो चुकी है, एंड द पुलिस ऑफिसर फाइंड्स दैट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज बीन अराइज आउट ऑफ द सेम फैक्ट इंक्लूडिंग देम इन द फाइनल रिपोर्ट, तो वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है. तो ही कैन कैरी अवे विद द केस एंड ही कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द permission of the magistrate and order of the magistrate, which have been stated in the Parveen Chandra case. So finally we have reached to our conclusion. Basically यहाँ पे cognizable and non-cognizable or investigated in different way and the nature of the offense is different. यही बताया गया है cognizable and non-cognizable के बारे में. I hope you have got the topic. Thank you for joining with us, and if you want more videos like this you can like and subscribe our channel. Thank you.